Yeah. I'll put it up in the chat box. Okay, this questions you can start referring from the textbook. Okay. Concept of business policy. Student, is the chat box visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, all right. Yeah. Yes, ma'am. All right. Thank you for your replies. Okay, guys, अब थोड़ा सा ये स्टडी करेंगे concept of business policy. Okay, मतलब what do you mean by policy? Then you will refer to what is SBU. Okay, that is strategic business unit. Okay, 1 मिनट के लिए चाहिए तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ. What is SBU on whiteboard? Okay, just tell me if the whiteboard is visible. It is, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hanji, Yes, okay. ma'am. So, for example, GCPL. Just taking this company's example, that is Godrej Consumer Products Limited. Okay. अभी इसमें है. Let me just mention Godrej. Okay. GODREJ. Okay. हाँ. तो गोदरेज का ना स्टूडेंट एक यूनिट है which is GCPL, which is purely into making shampoos and soaps and consumer products, basically hair color. Okay, तो ये GCPL हो गया. और फिर उसमें ये कंपनी और क्या बनाती, गुड नाइट आपने सुना है ना, गुड नाइट मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. फिर yeah, so all these products are made by GCPL. Okay, then second one is, just a moment guys, yeah, Godrej Boys, okay, which is into furnitures, okay, and making lock pata hai na, tala. Okay, so again let me tell you, okay, best quality. And हमारे इंडिया में जब बैलेट वोटिंग स्टार्ट हुआ था तो उसका जो लॉक सिस्टम है ना, वो गोदरेज को वो पास हुआ था. ओके, वेयर इन द टेंडर वाज अप्लाइड बाय very renowned institutions also. Okay, but Godrej got that opportunity. Just I thought I share with you. तो Godrej Boys क्या बनाता है, furniture and lock. Okay, so basically those products. Then we have Nature Basket. सुना है ना आपने? नहीं सुना है तो अभी देख लो. Again, Nature Basket is another business that Godrej is running. Nature Basket में they are into basically organic food items. Okay. So these are, now what are these? Okay, Godrej is the main primary organization बोल सकते हो. ये जो GCPL है ना, ये SBU है. क्या है? SBU, that is strategic. टाइप नहीं हो रहा है ना, एक सेकेंड. हाँ, that is strategic business unit. Okay, students, all right. Yes, ma'am. Similarly, voice is also another SBU. Okay. Then Nature Basket is another SBU. All are of Godrej only. Godrej का ना ये भी है, क्या बोलते हैं, they are also into construction. वो भी एक another SBU हो गया. Completely new line of business ना. Yes or no? Right? So बोलो ना, yes or no? Yes, ma'am. ये कंस्ट्रक्शन जो है ये Yes, भी ma'am. क्या हो गया, another SBU. Similarly, students, Reliance का communication SBU है, Reliance का power SBU है, Reliance का public transportation, उनका metro जो उनका project है is an SBU. Reliance Entertainment is an SBU. सबके सबका owner Reliance है, लेकिन ये अलग अलग businesses है which is running under the name of Reliance, owned by Reliance. Okay, तो basically ये SBU का concept क्या होता है, that companies ना sometimes, just 1 minute, हाँ, टाइप हो रहा है ना गाइस. हाँ, ऑल राइट. तो यस, तो जैसे हम लोग कॉम्पिटिटर के साथ में compete करते हैं ना,
तो वैसे ही ना स्टूडेंट्स ये आपस में compete कर सकते हैं, इनके बीच में भी कंपटीशन हो सकता है एंड हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ऑफ कोर्स। ओके, कौन सी एसबीयू है जो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है कंपनी को? ओके, तो जीसीपीएल कंपटीशन में है विद बॉयज, विद नेचर बास्केट, विद कंस्ट्रक्शन लाइन of business. So basically, these SBUs are created so that there is intra competition and the company can enter into different line of businesses and have a presence in different industry. Okay. जैसे अभी ना स्टूडेंट्स, मैंने एक शॉप ओपन करा, ठीक है, आई एम हैविंग अ शॉप इन चेंबूर, और चेंबूर में मेरा जो शॉप है वो कपड़े का है। आई एम सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ओके, अभी वही शॉप मैं वाशी में भी खोलती हूँ, सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। फिर वही मैं कोलाबा में भी ओपन करती हूँ। मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मार्केट इंटेंसिफिकेशन कर रही हूँ। ओके, आई एम डीलिंग विद द सेम प्रोडक्ट। ओके, only that I am entering into different new markets. Okay, on the contrary, अगर मेरा समझो चेंबूर में रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, वाशी में मेरा फूड का बिजनेस है, फिर मतलब फूड स्टॉल्स है, फिर या रेस्टोरेंट है, फिर कोलाबा में मैं इमिटेशन ज्वेलरी का आइटम सेल कर रही हूँ। ओके, तो मेरे अलग अलग बिजनेस हो गए ना, अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। यस और नो स्टूडेंट्स, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is always advisable to be present in different industries. Okay, आप इन मार्केट इंटेंसिफाई करो, दैट इज अ गुड थिंग, बट द रिस्क क्या होगा कि अगर एक मार्केट, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जस्ट फॉर इंस्टेंस, ओके, आपका इमेज खराब होता है किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में, तो आपका सेल्स जो है ना वो सारी मार्केट में इफेक्ट होने वाला है। ओके, या फिर कभी ऐसा हुआ कि किसी कारण की वजह से पर्टिकुलरली वो इंडस्ट्री बंद हो गई, तो यार आपका तो जो बिजनेस जहाँ अलग अलग जगह पे फैला हुआ है सब जगह बंद हो जाएगा फिर। करेक्ट ना? सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज so that the company is getting sufficient revenue to run the organization. Okay, also it enhances your goodwill, क्योंकि जो कंपनी डाइवर्सिफाई करती है उस कंपनी का नाम मार्केट में बहुत अच्छा होता है, बैंक उन्हें लोन देती है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, लाइक दैट। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ एसबीयू। एनी डिफिकल्टी योर स्टूडेंट्स इन एसबीयू? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैं चैट बॉक्स में तो मैंने टाइप किया है पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी एसबीयू। ओके, देन आई एम जस्ट टाइपिंग हियर इन द चैट बॉक्स मिशन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स द चैट बॉक्स इज विजिबल। विजन, Yes, ma'am. goals, objectives. Okay guys, हाँ, फिर उसके बाद में only these concepts you have to focus from unit 1. Okay, what I have typed in the chat box, I repeat: business policy, SBU, mission, vision, goals and objectives. All right guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, All right. ma'am. Then coming to chapter 2. Okay, I'm stopping the share screen just a moment. Yeah, coming to chapter 2, students, my chat box is visible. Please you note down this, huh? Environmental analysis जो आपने already last year business environment में study किया है, that is SWOT analysis. Analysis of internal environment and analysis of external environment. याद है ना आपको ये आंसर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now उसमें next is, okay, 1 minute, हाँ, SWOT analysis उसको बोलते हैं basically, and then sorry, stability strategy. Okay, just note down all the questions. Stability strategy हो गया, फिर उसके बाद में growth strategy. If you're not writing down somewhere, at least take the screenshot. Okay,
Then retrenchment strategy. Retrenchment में आप सारे study करोगे. Turnaround, okay. And next is you have divestment strategy. Then you have liquidation strategy. Okay, सारा कुछ पढ़ना है. Limitations of liquidation, procedure of liquidation, everything. Okay. उसके बाद है आपका integration strategy. Okay. You're going to study vertical integration, forward, backward, horizontal integration. फिर उसके बाद में है internationalization strategy. I hope you remember how to enter into international markets. हमने study किया है ये answer. Strategic options, licensing, franchising, joint venture, one country production base, BOT, greenfield operation. याद है ना आपको guys? Yes, yes. Yes, ma'am. एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जरा नोट डाउन करके रखेगा. मैं कहीं पे लिख के रखो, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पेंडिंग. बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पेंडिंग. ओके, ठीक है. ऑलराइट स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में हमने कौन सा कंप्लीट किया है? प्रोडक्शन वाला कंप्लीट कर लिया था, करेक्ट. HR कंप्लीट कर लिया था. मार्केटिंग कंप्लीट हो गया है. बहुत लेंदी आंसर्स हैं ये स्टूडेंट्स. या अब महक नोट डाउन. पेंडिंग इज R&D एंड फाइनेंस. Yes, Okay. ma'am. ओके, ऑलराइट. ओके, इसके बाद में कमिंग टू इम्प्लीमेंटेशन. BCG मैट्रिक्स डन. ओके, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ. BCG मैट्रिक्स हो गया है. इसके बाद में प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन हो गया है. That means what are the different procedures? एक सेकेंड. प्रोसी ओके, प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन के बाद में महक नोट डाउन. GE9 सेल, GE9 सेल, Porter's 5 forces. अच्छा, मैं ना टाइप करती हूँ. महक, only you will note down this. हाँ, Yes, ma'am. Porter 5 forces और नेक्स्ट है 7S फ्रेमवर्क. ये जो ब्रैकेट में है मैं कि आप नोट डाउन करके रखो. Done, ma'am. ओके. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, मॉडल्स ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग. ये भी बाकी है महक. मॉडल्स ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग. ठीक है, डन दिस. ओके, देन coming to the leadership style is done. No, it is done in detail. Last year भी अच्छे से हो गया है leadership styles. Okay, values and ethics. I want you to only read. Last semester हमने किया है ये values and ethics. You will read this question. Okay, अभी हम लास्ट यूनिट के कौन से आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं. तो कॉजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल changes. Okay, this is done. Actually not done, we will complete this now. Okay, organizational factor is remaining. Individual and group factor is done. Okay, individual, economic and group factor is done. And now we will do organizational factor, फिर वो हो जाएगा. Okay, and then process of management of change भी हो गया है. मतलब first you institutionalize, है ना, वो वाला आंसर. Process of management of change. Okay, this is also done. अभी ये reasons और reasons is also done. Sorry, reasons of organizational changes is also done. I hope students you are referring to the chat box. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
All Yes, right. ma'am. And today, okay, guys, today I'm going to complete this answer, which is causes of resistance to change. एक last factor बाकी है that I will complete it. फिर उसके बाद में I will complete measures to overcome changes. Okay. Now, what is spending in this subject in this particular unit? लिख के महक लिख लो steps in strategic evaluation process. Steps in strategic evaluation process. Noted, ma'am. Okay, that's it. Okay, and on that note, students, हमारा ये पूरा synergy note down करो महक, synergy, concept of synergy. That's it. Mahek, can you tell me total number of questions that are remaining? I'm so sorry, guys. Ma'am, 8. 8 questions. Okay. ये synergy को include करके ना. Yes, ma'am. So total this 8 questions are remaining, and then students the syllabus will get over for strategic management. Okay, guys. And then I will Yes, ma'am. start with Hanji. And then I'm going to start with the revision sessions from the first week of October. Okay. In some cases, I might not be able to explain you the entire answer from this 8 remaining answers. What I do is, उसके जब हम sample MCQ questions का revision होगा ना, तो if this topic is coming, I'll explain you there. Okay, जैसे अभी मैंने SBU आपको explain किया, concept of SBU. अभी आप clear हो ना what is SBU, right? So similarly, few questions I will cover during the revision session. क्योंकि 8 lectures अभी ये month में तो नहीं मिलेगा, September end होने आया है. I want to spend more time in revision, okay, so that you are thoroughly prepared for your exams. Similarly, I'm going to do the same exercise of analyzing the syllabus with motivation and leadership and recruitment and selection. Okay, students? Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. ma'am. All right. Okay, now I'm sharing the screen. Okay, we will just complete that answer which we have started yesterday already. Almost, okay, I'm so sorry, ये TY का open हो गया है. 1 minute. Yesterday, students, we have started with this causes of resistance to change. Not yesterday, 2 lectures before. We have already completed individual factors, the fear of unknown, problem of ego, lack of trust, वो वाला point था. Then we have completed economic factors yesterday. Okay. That economic factors are also the reasons why people do not accept changes so easily, because they fear कि उनका job चला जाएगा. Technology takes over. फिर उसके बाद में we have seen problems of incentives also. जो workers overtime करके कमाना चाहते हैं, technology take over करेगा, they lose this opportunity, hence they resist changes. उसके बाद group factors था. Group factors में we have seen group dynamics. लोग अपना group नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वो लोग changes को resist करते हैं. And finally, we have seen vested interest. Recap कर रही हूँ इसलिए fast जा रहा है, ठीक है. वेस्टेड इंटरेस्ट में आपने क्या स्टडी किया था? अगर मैं लीडर हूँ किसी ग्रुप की, ओके, तो मैं नहीं चाहती चेंजेस हो, कुछ ये चेंजेस होने से शायद मेरा लीडरशिप पोजीशन चला जाएगा. ओके, वेरी क्विकली नाउ वी विल टेक ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट फैक्टर्स. कौन लीड करेगा ये? एनीवन? स्टार्ट कर दो. मैं करूँ मैम? एनीवन? यस यस Yes, ma'am. फ्रॉम योर First बेटा one, एट A. टाइम. ये अच्छा Oh, चलेगा. हाँ, okay, ma'am. डायरेक्टली स्टार्ट. हाँ, डायरेक्टली स्टार्ट करो, अपने पास टाइम भी नहीं है. डायरेक्टली स्टार्ट Okay. करो. वन इज रिसोर्स लिमिटेशन. ओके मौजीस. Okay. Resources limitation. Every organization needs to adjust to change in the external environment. For instance, if there are technological changes which need to be introduced in the organization,
For better performance, organization might find 1 minute, emojis, I'm changing the sheet. it difficult to introduce the technological changes due to resources constraint. In other words, an organization might not have adequate fund and manpower to introduce the technological changes. Okay, students, point number 1 क्या बोल रहा है? Why the company is resisting to changes? Company itself also is not accepting changes. Reason क्या है? Point number 1, resource procurement. ओके यानी कि अगर मुझे ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करना है, आई नीड न्यू मशीन्स, आई नीड न्यू पीपल, आई नीड एडिशनल रिसोर्सेज. कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है? लिमिटेशन. रिसोर्स कंस्ट्रेंट यानी क्या? लिमिटेशन. तो अगर मेरे को नया चेंजेस इंट्रोड्यूस करना है, as a company I have to invest funds, okay, and I'm not having that much funds or that many manpower to introduce the new technological changes. जिस वजह से कंपनी खुद ही चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करती. आप लोग कौन सा आंसर स्टडी कर रहे हो? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज? मतलब बदलाव को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं लोग? ओके, हमने इंडिविजुअल रीजंस देख लिया, ग्रुप रीजंस देख लिया, इकोनॉमिक रीजंस देख लिया. ये लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंपनी चेंजेस करना तो चाहता है, लेकिन कंपनी क्यों ये चेंजेस नहीं कर पा रहा है? तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? रिसोर्स एलोकेशन. इट इज नॉट पॉसिबल for some companies to introduce changes because of lack of funds. लेक्चर का टाइमिंग 9:30 है. जेबा खान इज एंटरिंग द रूम नाउ, वेटिंग रूम. प्लीज कन्वे हर, someone, whoever is her friend, that ma'am is not going to take. Any difficulty, students, in understanding this point? No, ma'am. No, ma'am. So moving on to the next point, which is stability of system. Okay. Stability of systems. Organization tend to develop certain systems which bring benefits to the organization. The organization might be so used to the system that it might find it difficult to replace with new and better system. Even though the new system might bring better result than the existing one. For instance, most educational institutions are comfortable with the present system of the education, where the students are passive receiver of knowledge from the teachers, and as such emphasis is not replace an interactive learning systems. Okay, now it is a very interesting point. Please listen to this carefully. The company wants to introduce change. However, the company is not able to introduce the change because it is very comfortable with the present working style. Okay, जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, कंपनी उसको इतनी हैबिचुअल हो चुकी है कि नया वर्किंग स्टाइल अगर इम्प्लीमेंट करना पड़ा तो कंपनी नहीं कर पाएगी. टू मच स्टेबिलिटी इज हैविंग. इसलिए बोलते हैं ना कि कभी भी जब आप please bring flexibility, okay, because if you are constantly stable, okay, with the same strategy, with the same set of people, with the same set of ideas, with the same pattern of working, with the same methodology of working, क्या होगा पता है? आप सिर्फ वही कर पाओगे, आप नया चीजें ट्राई नहीं कर पाओगे, आप नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये प्रेजेंट सिस्टम हमको इफेक्टिव है या नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा है. प्रेजेंट सिस्टम हमारे लिए कंफर्टेबल है, एंड दैट इज व्हाई द कंपनी इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग changes. The very interesting example given here is most of the education system is not, encouraging interactive learning. मतलब interactive कैसा? टीचर भी बात करे, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर हो टॉपिक के बारे में, थोड़ा गूगल से इंफॉर्मेशन ले, एंड देन जब सेशन हो रहा है वो टाइम पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो. ओके, अच्छा, सिस्टम ऐसा क्यों नहीं एनकरेज कर पा रहा है? क्योंकि अभी पैटर्न ही वैसा है. स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर, वो खाली बस बुक ओपन करके सुनते जाएंगे, टीचर पढ़ाती जाएंगे.
ओके, ये सिस्टम हमारा बन चुका है। ओके, और हम लोग नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं होता है। ओके, ये ब्रेक करना पड़ेगा ना, ये वॉल जो सेशन महक ने लिया, आदित्य ने लिया, सरिता ने लिया, ये क्यों सिर्फ यही लोग, बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ओके, जब तक हम ये ब्रेक नहीं करेंगे ना वॉल, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, कि हम इंटरेक्टिव लर्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर पाए। अभी ये जो डिजिटल लर्निंग है ना, आपको क्या लगता है ये हम क्या पहले नहीं कर सकते थे? ये ऐसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कितना अच्छे से हो सकता था। मॉर्निंग में आप कॉलेज में लेक्चर्स विजिट करो, शाम में रिवीजन लेक्चर ऑनलाइन हो सकता था। किया हमने कोशिश? कभी कभी नहीं। ये तो हमको कोरोना ने फोर्सफुली ये सिचुएशन में डाल दिया, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं। हम लोग ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। उनके ये तो पहले भी हो सकता था, इंटरनेट तो पहले भी इंट्रोड्यूस था, है ना? यस और नो स्टूडेंट्स, करेक्ट मी इफ आई एम Yes, रॉन्ग। ma'am. ये तो Yes, हो ma'am. सकता था, लेकिन हमने कब इंट्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स? जब हमें कोरोना ने या पैंडेमिक ने ये सिचुएशन में डाल दिया, हमने इसे तब इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो बोलने का मीनिंग क्या है? कंपनी काफी स्टेबल फॉर्म में है, कंपनी प्रेजेंट सिस्टम को ही कंटिन्यू करना चाहती है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग चेंजेस। ओके, I think organizations need to rework on that, because if you continue working in the old style, you will be out of the competition 100%. Any difficulty there? No, ma'am. And okay, so we will take this one more point. Okay, and then the fourth point, I'll just explain you without reading. Mojis, beta ye read kar lo, traditional management philosophy. Yes, ma'am. Traditional management philosophy. Traditional managers do not like to introduce changes in the organization. They are content with the present performance of the organization. They count more on past successes rather than future prospects, and therefore they might not introduce changes in the organization. Okay, so अभी ध्यान से सुनो, traditional management philosophy means what? Old style of working. Okay, and also those management members who are very, reluctant to the same system of working, the same way of working. ये लोग ना जल्दी changes introduce नहीं करते, and therefore the company becomes outdated. Okay, अगर आपको एक modern organization बनना है, तो आपको मॉडर्न अप्रोच यूज करना पड़ेगा, है ना? ये जो जिनकी फिलॉसफी ही आउटडेटेड है, ओके, जो फियर करते हैं चेंजेस को, तो डेफिनेटली वो कंपनीज, यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, कल भी मैंने बोला था, आई रिपीट इट अगेन, डिसीजन तो लेना चाहिए, उसका आउटकम चाहे जो हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दो है ना? दो प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या बात है, आपकी कंपनी कितना आगे बढ़ेगा, है ना? लेकिन नेगेटिव हुआ तो आप एक लर्न करोगे, लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करोगे ना। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes. लेकिन डिसीजन लिया ही नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट? एक ही है, नेगेटिव आउटकम। वो फर्स्ट वाले केस में तो दो पॉसिबिलिटी था, अब ये डिसीजन लोगे ही नहीं तो 100% उसका आउटकम क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, सो आई थिंक मैनेजमेंट फिलोसफी, ओके, उस पर रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लोग दे स्टार्ट adopting the modern way of thinking, become more open minded and start introducing changes. However, अभी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि those companies with outdated way of thinking will not introduce changes. बहुत सारे रीजंस है, रिस्क नहीं लेने का, मेजर रीजन तो यही है, जो मैनेजमेंट मेंबर्स है ना, उनको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वो जितना पैसा उतने पैसे में खुश है। सी द सेकेंड लाइन, दे आर कंटेंट विद द प्रेजेंट परफॉर्मेंस, मतलब वो बहुत हैप्पी है, भले थोड़ा प्रॉफिट, पर वो थोड़ा प्रॉफिट में हैप्पी। Okay, so such kind of companies, maybe they are making profit, but very little for themselves and for their employees. Nation के contribution में कुछ भी नहीं आने वाला है. Okay, we want companies which are progressing at a faster rate, so that our country is, getting the benefit. Okay, any difficulties still here, students? ऐसा कुछ आपको नहीं समझ में आया?
No, ma'am. No, ma'am. अभी अगर आप रिव्यू करोगे ना इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके, प्रेजेंट वन, ओके, I think though you want, you can criticize the government. Of course, everybody has got that freedom and liberty because you are in a democratic country. और बिल्कुल आपकी you are you have a freedom of speech and opinion. लेकिन मैं आपको जस्ट बोलना चाहती हूँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ना, ये है ना वो कंपनीज को encourage करती है जो फास्ट ग्रो हो रही है, okay, with a view that with this fast growing companies there will be a lot of employment opportunities for the youth, okay, and on that note per capita income बढ़ेगा तभी तो national income बढ़ेगा. इकोनॉमिक्स का ये तो सबसे बेसिक फंडा है ना कि per capita income बढ़ेगा तो national income बढ़ेगा. इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट कंपनीज को इनकरेज कर रही है, लेकिन उस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इनकरेज कर रही है जो फास्ट ग्रोइंग है. India cannot just grow at a very slow rate. We are present in the international market since long. 1990s में globalization, privatization हो चुका है, तब से हम present है. We need to now grow very fast. Okay, I think these reasons are sufficient for you to understand the organizational factors. ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया, you can get back to me. The session is going to get over in another 1 minute. I hope there is no doubt, students. No, ma'am. फास्ट ma'am. गए क्या? नहीं ना, फास्ट गए तो बोलो हाँ प्लीज. No, ma'am. Okay. All right, guys, and I end the session here. Meet you soon in the next class. HR students, महक absent मत रहना. Coming session में we will just do the analysis of syllabus completion and pending. Okay. Yes, ma'am. All right, guys. Have a nice day ahead. Nice meeting you here. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Welcome. Bye bye. एंड क्यों नहीं हो रहा है?